Kakak राम राम, सबको के राम राम. Sa totoo Pandit pa ji, pala, Palagi. Jai. Dank u wel voor erbij te zijn weer. Ja, ik heb even uitgekeken daarnaar hoor. हम हालफ negen से बैठल है कि इन लोग करी माँ गोपेश्वर दास ना तुखांग देव. Oh. wil je ze zeven en acht pandit? जी. Ja, oké. En Ik moet erbij zeggen dat Gopes Dasji is heel druk bezig, ook met zijn eigen dharmische dingen. En hij is een heel moeilijk bereikbaar mens, want maar ja, hij is seva karel jay sab ko tap. Ik kijk ook ernaar uit, hoor. Ik wil elke dag lezen, maar ja, het is leuker om samen met mensen te lezen. Ja, sowieso. Dat is mijn ervaring. Maar goed, Asan Kere. Dank u wel iedereen. Ja, we starten. Het is al op record. हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवागुं सस्तनुभिर्यस्य देवहितं यदायुः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः. अथाष्टमोऽध्यायः गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक. सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए. वहां उन सब के मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया. तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि में पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया. वहां अपने भाइयों को साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे. भगवान श्री कृष्ण ने दौम्य आदि मुनियों के साथ उनके सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता. इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर की उनका वह राज्य जो धूतोर्ण छल से छीन लिया था वापस दिलाया था, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया. साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए. इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की यश की तरह सब ओर फैला दिया. इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया. उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया. उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया. तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए. उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है. उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए. आपकी अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के सीमित
बन रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान है। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल, भगवान श्री कृष्ण उसके बाद सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों की वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों की भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी आपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया की कवच से ढक लिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उनकी निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार स्तुति की। कुंती कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाता जाना, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढक लेते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? कैसे मूर्ख लोग दूसरा भेष धारण कर किए हुए नत को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परम हंसों की हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाल गोपी गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनकी नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरी बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, ऐसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी है, आप सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण, कहाँ तक जिनाओ विश्व से गृह में की भयानक आग से हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवासी विपत्तियों से और अनेक बार युद्ध में
अनेक महारथियों से, शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र भी अपने ही हमारे रक्षा की है। जगत गुरे, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन ही जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आ पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचित है। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शक्ति स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप से ही टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्यों करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनि के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आने पर दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था, तब उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला रहा। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिनसे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष तो कहते हैं कि जैसे मल या चली की कीर्ति का विस्तार करने की लिए उसने चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आप उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यो कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म सुपता और ऋषि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों की नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों की अत्यंत भार से समुद्र में डूब हुए प्रार्थना से उनकी भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्म की बंधन में जकड़े हुए
पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अवलंबित आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। भक्त वत्सल कल्पतरु प्रभु, क्या आप अब अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों की अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजा के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों की और हमारे पुत्र पांडवों की नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्ह से चिन्हित यह कुरु जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपकी चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। आप विश्व के स्वामी है, विश्व के आत्मा है और विश्व रूप है। यदि वंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है, आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा, यदि वंशी शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और दैत्यों का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं के वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला मर्म जाने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु कोई सांत्वना न मिले। उनको उनका शोक न मिटा। सौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपनी स्वजनों के वध से बड़ा चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला
दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुआ। इस अज्ञान को तो देखो, मैंने सियार कुत्तों की आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों की पति और भाई बंधुओं को मारने से उसका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थ्योचित यज्ञ याग आदियों के द्वारा मार्जन करने के समर्थ नहीं हूं। वैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। मदिरा से मदिरा को अपवित्रता नहीं मिटाती जा सकती। वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराणे पारहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिर तापो नाम अष्टमोध्याय। कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तैयारी कर रहा है om weer naar Paramdham te gaan. En maar steeds wordt hij gestopt door onder andere Uddhav en ook door de Pandavas wordt hij gestopt. Op een bepaald moment komt Uttra naar hem toe, omdat ze bang is van die Brahmastra die Aswatthama op de heeft losgelaten om de toekomstige Raja Parikshit, die momenteel in de buik zit, om hem te doden. Bhagwan Sri Krishna, en heel mooi schrijft de Bhagavad dat ook, dat ondanks de Brahmastra amog hai, amog wil zeggen dat je hem niet kunt weghalen, maar dan nog heeft Bhagwan Sri Krishna de Brahmastra kunnen stoppen om de vernietiging van het vrucht in de buik van Uttra te beschermen. En nadat begon Kunti heel mooi Bhagwan Sri Krishna की स्तुति. Ze begon hem te verhemelen. En ze heeft dat heel mooi gedaan door al zijn lila's op te sommen. En op het laatst, waar dan ook het te zeggen van, heeft ze besloten met de stuti van Heer Bhagwan, je bent een niemand kan jou echt, niemand kan vertellen wie je bent. Maar dan nog kunnen we vertellen dat je van ons bent. Heel mooi heeft ze die stuti gedaan. En Yudhishthir, die komt op het laatst aan het woord. Op het laatste stukje aan het woord. En waarbij hij nog steeds gebukt gaat onder het stukje dat hij die Mahabharata aanhalings- en sluittekens. Want bij het winnen van een gevecht, van een yudh, dan heb je sowieso dat op het moment dat je wint, dat je zoveel hebt vermoord ook. Yudhishthir geeft dat ook aan, van ondanks een raja dat doet, een dharma yudh aangaat, dat hij geen paap opkrijgt, maar dan nog gaat Yudhishthir gebukt onder het stukje van dat hij de Mahabharata
heeft gewonnen. अथ नवमोध्याय युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े हुए थे। सौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जूते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, दौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। सौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर ऐसे शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सौनक जी, उसी समय भरतवंशियों की गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, दौम्य, भगवान व्यास, बृहस्पति, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृहसमद, अस्मित, कंक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महामहगण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि गण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बरभागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्यों का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण का बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम की आंसुओं से भर आ गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित होने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदाचि योग्य नहीं थे। अतिर्थि पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटा थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई, वे सब इन्होंने लीला ही किए हैं। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र या राजा युधिष्ठिर हो,
गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हैं, गांडीव धनुष हो, वहां स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला कहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, उस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इससे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हें उन्हीं स्वामी और इसकी पालन करने समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मित्र, दूत और सारथिक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपने मन लगाकर और वाणी से इनकी नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्र से उलसित मुख वाले चतुर्भुज स्वरूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर उनकी यह बात सुनकर शैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्म की संबंधी अनेक रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागश वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण समय आ पहुंचा, जिस मृत्यु को जाने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग
चाहा करते हैं। इस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज रूप विग्रह पर उस समय पीतांबर पहरा रहा था। भीष्म की आंखें उसी पर एकटक लगा गई। उनकी शस्त्रों की चोट से भी जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनकी जो कुछ अशुद्ध शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहे हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों की समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घराली अलके लटकी रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय जो कि उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनकी मुख पर लहराते हुए घुमघुमारे बाल घोरों की ताप की धूल से मतमेल ले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंद शोभायमान हो रही थी। मैं अपनी तीखे वानों से उनकी त्वचा को भीग रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना की बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष की सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना की मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों की वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैं प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसी सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने के प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथियों को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझको झपट पर
और परे। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनकी कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आताताई के तीखे वाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसे करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध के मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते हो रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मारन सन्नी परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, भाव युक्त चेष्टाओं की मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनकी अंतर्धान हो जाने पर प्रेमानंद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके मन तन्मय हो गई थी, उन भगवान श्री कृष्ण मेरे परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा के सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूप से दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबसे हृदय में विराजमान है। उन्हीं इस भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उसके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, वैसे जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलक शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी, युधिष्ठिर उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर के स्तुति की। उसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में जानकर बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां
अपनी चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गांधारी ढस बढ़ाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंसास्याम संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंबो नाम 9वां अध्याय। कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल। Pandit And Devkumar, Sugabin, welcome. Ja, Pandit Kanai kunt gaan doorgaan, sorry. हाँ, इन 9 अध्याय में और सूत जी heeft dan het stukje verteld van dat Raja Bhishma Pitama zijn sharier, zijn lichaam heeft verlaten. En opvallend is de stuti van Kunti ji die zo net is gebeurd in 8e adhyay. En weer de stuti van Bhishma voordat hij zijn lichaam heeft verlaten. Het verschil duidelijk. Die van Kunti, die stuti van Kunti heeft duidelijk uitgewezen dat het een stuti ging van een vrouw waarbij ze de prem, de lila van Bhagwan Sri Krishna heeft bezongen. En die van Bhishma Pitama heeft duidelijk de vorm gehad van een yoddha, van een strijder, die Bhagwan Sri Krishna ook zo heeft bezongen, op die manier heeft bezongen. Na de stuti van Bhishma Pitama heeft Bhishma Pitama zijn lichaam verlaten. Yudhishthir heeft dan zijn kriya gedaan en heeft dan volgens Agya zijn rajya, zijn rijk dan overgenomen. En hiermee is dan de 9e adhyay dan tot een besluit gekomen. Bhaiya Gopeshwarji? Ik zie dat we nog een half uur hebben. Radha, wat stel je voor? Ja, iemand had een vraag en hij wilde weten wat tripate betekent. Tevredenheid. Oh, u heeft al geantwoord. Dank u, Pandit Sri Govinji. Willen mensen nog een beetje lezen? Ik weet niet. Het Hebben kan. mensen tussentijd wat vragen? Dan kunnen Ja, ze vragen even kan ook. vragen. Dan Ik kunnen heb een we. vraag. Pandit Gopeshji, Har Har Mahadev, Hari Om. Ik heb een Har vraag. Mahadev, Pandit. Ja. Ik kwam eventjes later vanwege een internetstoring. Pandit Kanhaiji, het is nog steeds Mahatmai. Als ik ben eventjes niet erbij. Nee, nog is steeds Pratham Skanda? Mahatmai. Is Pratham Skanda? 9वां अध्याय. अच्छा, ठीक है. Goed. Dus Misschien een beetje ja, uitleg, ik weet het niet. Als dat oké, dan Pandit Kanhaiji een beetje uitreksel heeft al voorgelegd. Wij moeten beginnen volgende week met 10, no? Ja. Atcha. Mag ik even wat toevoegen? Ja, gaat u gang. Pandit Kanhaiji, ik denk een heel mooi punt is daar aangehaald. Dat is Sarupya Mukti. Mukti is daar beschreven. Mukti weten we allemaal dat het verlossing is. En het is goed voor de luisteraars. En het is iets voor de hele mensheid. Dat er 5 mediums zijn van Mukti. 5 माध्यम है मुक्ति के लिए या 5 प्रकार की मुक्ति, 5 soorten van मुक्ति. सालोक्य, सारूप्य, कैवल्य, सामीप्य, सायुज्य मुक्ति. तो मुक्ति weten we allemaal, बस लोग मुक्त हो सकता है maar. Er zijn 5 niveaus. सालोक्य कि भगवान के लोक में वो भक्त वास करता है, die verenigd daar in de loka. Sayujya, die verenigd met God. Sayujya. Samipya, die is dicht bij God. Sarupya, die is verenigd met het vorm van God.
En Salokya, Sarupya, Samipya, Sayujya en Kaivalya Mukti. Kaivalya is alleen maar dat wat het is. Kaivalya, Keval wahi hai. Keval wahi. Zo, het is heel mooi, dit stukje. Ik heb vaak hierover gesproken. Ik denk van dit kan hij ook. Maar dit is een stukje essentie van het katha. Die, als wij moeten koesteren als mens, dan is het mukti. Maar er zijn niveaus van mukti. Als wij dieper ingaan, dan kunnen we dat stukje zien. En we kunnen weten waar wij aankomen op basis van onze bhakti niveau. Dhanyavad. Dank u wel. Dank u wel. Welke Er is een iets vraag. zeggen? Er is een vraag. Haribol. Ja, stel je vraag. Ja. Jai Sri Krishna, Rabiko. Jai Shri Krishna. Ik had een vraag gesteld over het woord triptier. Wordt gebruikt bij als iemand overlijdt. Want ik kan enigszins uitleg gegeven worden wat het woord triptier betekent? Mag ik ingaan? Alsjeblieft. Tripti, ik heb het geschreven daar. Voor Radha. Tevredenheid, ja. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden, ik ben bevredigd. Tripte ho gaya hoe mij. Zo, ik denk er is een aansluitende vraag bij. Ik denk, wil je de vraag nog een keertje beter stellen? Of dat de Ja. vraag was of iets anders? Het woord triptier wordt gebruikt als de koike mricho ja, dan horen wij dat. Oké, Ik denk ja. dat het heeft over triptium tam. Tripti, Triptium tam. tevredenheid. Triptium tam. Oké. Ha, In tripti dit tam, verband tripti heeft tam. het met shraad, in shraad vormen. Wanneer we dat woord in shraad gebruiken, daar heeft hij het over. Ja. Dat is bij tarpan. Tarpan, dat is aan het eind. In een schaal of in een thali met melk, ghee, honing, suiker, keel erbij. Ja. Dan stellen we de devtas tevreden. We stellen de rishis tevreden, de manushya tevreden en de pitras tevreden. Vandaar horen we het woord tripyatam. Het is afgeleid van tripti. Tripti, tevredenheid. Misschien kan hij ook wat bijvoegen. Het heeft ook te maken met voldoening. Want u heeft het soms ook vaak dat nadat je bhojan eet, nadat je bhojan hebt gegeten, dus het eten hebt gegeten, dan heb je daarna ook een toetje. Dus nadat je bhojan hebt gegeten, heb je die maag gestild. Maar dat toetje geeft je die tevredenheid, die voldoening van die bhojan. Dus met die tarpan proberen we dan die rishis, die devtas en die pitras tevreden te stellen voor hetgeen dat we misschien zijn vergeten te doen tijdens de puja of de shraddha. Dus het heeft tevredenheid, voldoening. Net zoals Panitsi Robinson net zei. Prachtig. Ik wilde even hierop ingaan over twee dingen. Panditji Kanhai, u zei iets van Kuntiji en Pitama Bhishmaji. Bhishma. Ja, dus hun gezang over Paramatma was zo prachtig. Hoe Paramatma geen einde heeft, geen begin heeft. En het is heel uitgebreid. Het raakt je en je beseft hoe Paramatma daar is voor ons. Want we kennen onze vele geboortes niet, toch? En dan wil ik terugkomen, dat even linken, correlatie brengen, linken met de triptum dat jullie net hebben uitgelegd. Wanneer we deze rituelen doen, dan de energie gaat ook niet alleen naar ons, maar ook naar hun. Want wij denken dat het lichaam hier is op aarde, maar wanneer we weg zijn, die ziel travelt door. Zij reizen verder. Dus die moksha nou, als we verder gaan lezen, gaan we snappen, we krijgen een beeld wat eigenlijk moksha is. Want uiteindelijk betekent het, Paramatma kaise हम लोग के संसार के बंधन में से निकाले हैं. Dus van
geboorte na geboorte na geboorte, totdat we de lessen niet hebben geleerd. Dan pas krijg je moksha eigenlijk. Dus als er iets gebeurt in ons leven, is het goed om te stoppen en te denken, hey, waarom gebeuren die dingen? En dan besef je, ja, misschien heb ik dat in 10 levens eerder gedaan of something like that. Ik zeg niet dat het zo is. Maar dat reflecteert ook in Jyotish, in al die nakshatras en die grahas. En daarom pandits en acharyas werk is om, wanneer iemand bij je komt, hun te helpen met graha shanti, met puja en lezen van Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, zoals Gopesh Dasji ook doet met zijn studenten. Dat de mens herinnert, kijk, we hebben zoveel, maar het is goed om terug te gaan naar jezelf, zoals wij ook hier doen, transcenderen. Maar ook scripture, Vedische literatuur te lezen. En daardoor weten we wat we moeten doen. We krijgen een beeld, want niet iedereen heeft dezelfde doeleinden. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk moksha. Als jullie even hierop in willen gaan, dat zou goed zijn. Ik weet niet, als ik iets verkeerd heb gezegd. Je bedoelt op moksha. Ingaan Ja, op het woord moksha, Ja, wat het precies inhoudt en hoe je dat kan bereiken. Nou, luister, Pandit. Boy, Bhaiya Gopeshwar en Radhaji, moksha. Ik wil helemaal alleen volstaan van wat we... Natuurlijk doen wij dat. Hè? Wij doen alles voor die moksha. Maar uiteindelijk is die moksha alleen zijn kripa. Alleen zijn genadigheid. prachtig. We kunnen dat alleen maar bereiken vanuit zijn kripa en niets anders. En daarom deze 9 kanto's zijn zo belangrijk om te luisteren. Dus toen Kunti Mata dit gebed gaf aan Paramatma en zei, wij weten niet, aapje kripa se sab kuch ho, is prachtig gezegd hoor. Eigenlijk dat gebed wil ik in het Nederlands hebben. Als ik ga het opzoeken bij Gopesh Dasji Vedabase. Dus ik denk dat we daar hebben. Mag ik wat zeggen, alsjeblieft? Gaat u Ja, gaan. Moksha, we horen het makkelijk, kripa है भगवान के, maar ik heb ook begrepen, het is ook begrepen, कि प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा. Dat is de kracht van devotie, van bhakti, कि भगवान अपन नियम बदल देवे. Dus al is भगवान daar, कृपा हो या ना हो, पर भक्ति की शक्ति से इतना प्रबल भक्ति जब हो तो भगवान अपन नियम बदल दे, खुद चल करके आवे भक्त के पास. तो het probleem is dit, wanneer wij in de society, in de samenleving, dit gaat laten, dit stukje gaat laten van Bhagwan की कृपा है, gaat iedereen zitten wachten op kripa van Bhagwan. Wat gaan wij dan doen? Nou, onze deel is wat? तो ik denk, हमार भक्ति प्रबल हो. Onze bhakti moet stabiel en zo toegewijd moet dat zijn, dat wij kunnen afdwingen. कि भगवान चल करके आवे हमारे पास. Er zijn zoveel voorbeelden. शबरी गिद्ध अजामिल सुगत दीन रघुनाथ नाम उद्धारे अमित फल देत मुक्ति रघुनाथ. Dus शबरी गिद्ध अजामिल, भगवान खुद चल करके आए उसके पास. Dat was de kracht van toewijding, de kracht van bhakti. तो कृपा ठीक है, कृपा जब होगी तो फिर बस पूरा विश्व अनंत आनंदमय सच्चिद आनंदमय हो जाए. Dat klopt helemaal. Maar हमार कंती से dat moet zeker 100% zijn. Dhanyawad. Ja, Pandit, mag ik iets toevoegen uit de Srimad Bhagavatam? Wat Pandit Kanai zegt is ook zo. Je hebt 3 vormen van in de Srimad Bhagavatam. De Nitya Siddhas zijn de eeuwig bevrijde zielen die in de Vaikuntalok zijn. Je hebt de Kripa Siddha, die door Bhagwan Kripa, zonder wat te doen, gewoon Kripa Siddha. Er zijn een aantal gevallen beschreven, Bhagwan ke Kripa se usab muktoige. En je hebt de Sadhana Siddha,
John Pandit Deokumar बोले साधना करे भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदम। इन 9 प्रकार के भक्ति करे से, साधना करे से होकर कि भगवान देखे तू मेहनत करे तो वो रकम तू सिद्ध हो जा और तू अपने पाई सके। द श्रीमद् भागवतम नुमद्री फॉर्म is the kripa siddhi, what Pandit Kanhai zegt, de sadhana siddha en de nitya siddha. We moeten rekening houden dat er meer levende wezen in Bhagwan zijn dhaam zijn, in Vaikuntha. Er is maar een heel klein beetje levende wezen die in de materiële wereld zijn. Ik wilde even Dat is een kleine aanvulling. Ja, dank u. Het is zo prachtig hierover te praten, want Ja, helemaal. daarom heb ik zo heb ik Srimad Bhagavatam leren kennen, want ik besefte, ik doe yoga, ik doe meditatie, ik doe dit, dat, maar wat is dit moksha eigenlijk? En dan zo kwam ik, zo kwam ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, ik ben zo enthousiast ook, maar door bhakti te doen, besef ik, in Srimad Bhagavatam van 1 tot 9 is het mooi uitgelegd middels verhalen. We gaan dat later meer meemaken. बहुत भक्ति करे से तब भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब ओकर कृपा से हम लोग के बहुत अच्छा से मुक्त हो जाए. Ik weet niet, zo heb ik het begrepen hoor. Maar misschien moet ik, of course, ik ben niet daar en ik probeer, ik doe mijn best. Maar het was zo prachtig om te lezen dat ik dit graag met iedereen wilde delen en zo lezen. Dus Gopesh Das Ji se karwaila. Wat ik heb gelezen, de mukti wil zeggen dat we bevrijd zijn van janma, mrityu, jara, vyadi. Dat we bevrijd zijn van geboorte, ouderdom, ziekte, dood. Want in de spirituele planeten, in de Vaikuntha planeten, is er geen geboorte, ouderdom en ziekte. En natuurlijk ook geen dood. Daar zijn alle levende wezen, Satchit Ananda. In de Brahma Samhita wordt dat ook gezegd. En dat is wat we werkelijk willen. Als we kijken naar de levende wezens hier op aarde, niemand wil oud worden, niemand wil ziek worden, niemand wil doodgaan. Maar in de materiële wereld zien we dat iedereen doodgaat, omdat we ons verenigen met het lichaam. Maar de Bijbel zegt we zijn een ziel, de Bhagavad Gita zegt we zijn een ziel, de Koran zegt we zijn een ziel. Dus de Bhagavad Gita in hoofdstuk 2 probeert ons juist de verschil te leren tussen wat spiritueel is en wat materieel is. Hoe moeten we weten dat we hebben vanmorgen gelezen over dat er 2:12 na 2 Ewam Jatunasam, dat er nooit een tijd was dat ik niet bestond, nog jij, nog al deze koningen. En dat er nooit een tijd zal in de toekomst zal zijn dat we niet zullen bestaan. We zijn eeuwig als ziel. Maar in de materiële wereld, totdat we karma doen die ons karma bandana bindt in deze materiële wereld, zullen we keer op keer lichamen moeten nemen. En het doel wat altijd ook, ik hoor altijd in de Pravachan van de Pandits, is Durlab Manav Sharir. De menselijke leven is werkelijk alleen maar bedoeld om de bhakti te doen en terug te gaan naar de Vaikuntha Lok. Dat is wat ik er eigenlijk van begrepen heb waarvoor het menselijk. Ik vond het altijd, toen ik klein was, heb ik nooit begrepen wat bedoeld wordt met Chaurasila Kyoni. Nu pas begrijp ik werkelijk dat Chaurasila Kyoni van al die levende wezens, de menselijk leven alleen geschikt om bevrijding te krijgen. Kunt Pandit dat beamen of zeggen jullie zijn een andere mening toegedaan? Maar als ik mag eventjes daarop ingaan. U zegt het heel mooi. Ik wilde even erop ingaan. Dan kan ik vragen om Panditji te... Want we hebben meer kennis over dit soort dingen. Ik denk dat wij in Mrityulok zijn. En we moeten weggaan een dagje. En als je... Ik ben ook een beetje nog verdiept in Jyotish. En dan zie je daar hoe die planeten eigenlijk ons een boodschap geven. Dat het is goed om terug te keren naar jezelf. Je moet jezelf kennen. Want sab kuch jon bhai behere eigenlijk hamlong mee hai. We moeten onszelf leren kennen door contact te maken met die bron, met ons. Satchit Ananda, hamlong sab mee hai. Weet u? Dus anyway, Panditji kan hierop meer ingaan over deze dingen. Pandit Kanhai, we luisteren graag naar...
Ja, maar omdat we op dat lichaam hebben, toch Bhaiya Gopeshwarji en alle anderen. Dat lichaam stelt ons in staat om die karmas te doen, om die handelingen te doen. Want zonder het lichaam zouden we bijvoorbeeld die Bhagavad niet kunnen lezen. Nee, klopt daar helemaal Zouden we, dat lichaam is het medium om naar daartoe te gaan, om die moksha te bereiken. En ik denk daarom dat werkelijk het lichaam, het menselijk lichaam, Bauta Durlabha Manusha Tanapava, dat we werkelijk het lichaam hebben om die moksha te bewerkstelligen. Ja. Pandit Sigobit, hij heeft zo mooi zijn hand opgestoken. Ja, ik heb. Dus kijk, in mijn levensreis, kan ik zeggen, heb ik geluisterd. Ik luister nog steeds naar heel veel gurus, geleerden. En ik ga zeggen, inderdaad, ik ben toch deels eens met Pandit Kanai, ki sadhana dham moksha kar dwara. Sadhan een middel. Auto is een sadhan, een bromfiets is een sadhan, een vliegtuig is een sadhan. Sadhan, dat is een middel. Dus sadhan dham moksha kar dwara, dit lichaam is een sadhan. Moksha kar dwara, moksha ke dwar khula ja sakta hai. Goed, dus maar als wij dat als we goed begrijpen, het is mooi, de woorden zijn mooi, ki kripa Bhagwan ke, absoluut zeker, maar we moeten toch even focussen op, in de materiële wereld, zijn de mens, manush sharir hai, en als wij daarop niet focussen en de techniek, de tools geven aan hun, hoe moksha te bereiken, en we gaan het laten op pas Paramatma ke kripa ho to fir theek hai. Dat is op tweede plaats, denk ik hoor. Eerst moeten wij onszelf klaarstomen, ready maken, en dan fir oker kripa ho, dan kunnen we gaan. Dus wat ik zie, mijn besef, ontdekking in het leven, wij moeten ons ready maken. Matlab, sadhan, we moeten een vervoermiddel is niet, we zeggen het makkelijk een vervoermiddel, maar technisch zit het heel veel in elkaar. Heel veel in elkaar. Betekent ons leven, हम लोग के विचारधारा, हम लोग के बोली, हम लोग के श्रवण, हम लोग के देखना, हम लोग के उठना, बैठना, हम लोग के खान पान gaat heel veel bepalen. Goed. Dus daarop moeten we zeer focussen, want we zijn niet op de planeet aarde, we zijn tussen de mens en we zijn begeleiders. तो ऊपर बहुत ध्यान देवे के चाहिए. Goed. कृपा is algemeen, heel goed, बहुत अच्छा. मनुष्य तन सम कौ नहीं देवही, मनुष्य तन सम कौ नहु देही, जीव चराचर जाचत तेही. Er zijn zoveel levende wezens daar die koesteren naar dit lichaam, naar zo'n lichaam. Waarom? Sadhana dham moksha kar dwara, je moksha ka dwar hai. Dus dat is eigenlijk wat ik zie. Natuurlijk, de kennis kan mij meer laten zien en ik sta open voor. Dhanyawad. Ja, nee, heel goed, Pandit, want dat is ook wat wij moeten beoefenen, sadhana, bhakti. De middelen gebruiken, zoals de Nauda Bhakti, gebruiken om dus dichter bij God te komen. Maar uiteindelijk, wanneer we sadhana doen, zal toch de kripa van Bhagwan moeten komen. En belangrijk is dat wij onze moeite doen en daardoor de kripa van Bhagwan krijgen. En als we geen moeite doen, dan zal dat echt niet komen, denk ik ook. Maar sadhana is sadhan, wat jij zegt. Sadhana is sadhana en sadhana bhakti geeft de methodes hoe jij dus de sadhana's kan doen om dus die bhakti proces op gang te zetten. En dat wordt dus ook heel prachtig uitgelegd in de Ramayana en Sabrimata. De Nauda Bhakti wordt heel uitgelegd. En daarvan is in Kaljug, zie ik in Ramayana, Uttarkand, Doha 102,
zie ik dus dat een van de beste methoden in Kalyuk staat geschreven dat het mantra jap een van de sterkste methoden is voor Kalyuk. Maar we zouden het ook Mag ik even, Ja, Pandit Kanai. Ja, we zouden het ook anders kunnen bekijken. Ja. Van, die Kripa heeft ervoor gezorgd dat we vandaag bij elkaar zijn. Die Kripa heeft, hoe heet het weer? Binu Satasanga Vivekana Hoi, Rama Kripa Binu Sulabhana Soi. Ja. Die Kripa heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag bijvoorbeeld, of dat u vandaag uitgekozen is om vandaag die Bhagavad mee te luisteren. Vorige week was die Kripa er niet, dat ik erbij kon zijn bijvoorbeeld. Maar vandaag ben ik er wel. En die Kripa zorgt ervoor dat we dan, dat die sadhana gebeurt, dat die mantra jap gebeurt, dat die puja gebeurt. Want hij geeft die inspiratie, hij geeft dat stukje van die stoot van, jij wordt nou gekozen om die Bhagavad te lezen. En dan ga je het lezen. Dat is helemaal waar. De manier hoe jij het bekijkt is helemaal waar. Het geeft ons toegang om die sadhana bhakti te doen door de kripa. Want zonder kripa kunnen wij werkelijk geen sadhusang vinden. Ja, maar wat... is een verschil van context. Maar Shama, ik wil jullie allemaal bedanken, Radhaji en Panditji, Gopesh Bhai en de luisteraars bedanken. Ik moet vertrekken, ik ga naar crematie. Ik wil daarbij horen, dus ik wil jullie bedanken. Shama Karna. Goed, Pandit, hartelijk welkom voor je deelname en dan hopen we je volgende week weer te zien. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, Pandit. बहुत बहुत धन्यवाद. Ja. We vinden ook in hoofdstuk 18, Pandit Kanai, vinden we in hoofdstuk 18 werkelijk dat er 5 oorzaken is, 5 oorzaken grondslag is voor iedere handeling. Tijd, dat is nu een tijd, plaats. We zijn op een plaats, tijd, personen, motivatie en werkelijk de 5e is de wil van Paramatma. Voor dezelfde hadden wij dan ook geen internetverbinding. Dus dat is wel in de Bhagavad Gita vermeld. 5 oorzaken om iedere handeling te laten plaatsvinden. En de meest belangrijkste is werkelijk de wil van Paramatma. Ja, Radha, ik luister. Sorry, gaat u gang. Nee, we luisteren. Want voor hetzelfde geld bij Gopeshwarji en alle andere luisteraars, Pandit Sigubin had een internetprobleem. Hij kon zeggen, ik kan niet meer inloggen, hoor man. Maar die Kripa heeft hem toch die push gegeven van, log nu weer in, misschien kan het nou lukken. Ik persoonlijk stel me afhankelijk van Bhagwan's Kripa. Want als ik kijk naar mijn eigen, dan zie ik, man, wat zou ik kunnen doen? Dus ik stel me van de eindeloze Kripa van Bhagwan afhankelijk. Amapan kosis kari sadhana kare ke u, maar phir bhi amapan merendeel हम अपने के afhankelijk stellen kari Bhagwan tu kripalu haile tu jarur hamar upar daya kariye. Klopt. Dat stukje is zo mooi. Ik wilde erop even dat is voor mij persoonlijk dan, toch? Ja, en ik wilde dit terugbrengen naar Srimad Bhagavatam, waar Kunti Mata hele lijst van gedicht van Stuti heeft opgebracht naar Paramatma. Dank u wel, Panditji. En dan, ik wil ieder weer herinneren hoe Pitama op dat pijler lag. En u weet, u kent zijn leven. Veel mensen denken dat hij aan de verkeerde kant was en alles. Maar weet u, Paramatma had dat gekozen. Hij had dat bewust zo gedaan. Want hij is een van de Mahajans. Er zijn 10 Mahajans of 13, correct, maar ik weet niet precies hoeveel. En toen hij weg moest gaan, want hij had de keuze om weg te gaan. Krishna Bhagwan बैठ के मेडिटेट करत रहा था and then kwam Arjuna daar en Yudhishthir allemaal kwamen en zei, ito Bhagwan, ik kan het je mediteren, hij weet alles, maar waarom mediteert hij?
toen heeft hij zijn ogen geopend en gezegd, we gaan dit later snappen. Maar het komt erop neer dat hij met de mensen naar Pitama is gegaan, netjes opgedrest, om hem de kripa te geven. Oké, alles is goed, nu kan je gaan, weet u? En hij had hem de kracht gegeven om te praten, want hij had zoveel pijn. Hij kon niet praten. En Paramatma zei, begin te praten. Hij zei, waarom moet ik praten? U bent God. Waarom? Ik moet niet praten. De Paramatma बोले ना हम अच्छा ठीक है हम परमात्मा है ले तो हम तो क्या kracht delen betjijken. En hij heeft hem zoveel kracht gegeven. En hij begon toen Vishnu Sahasranama te en iedereen weet wat Vishnu Sahasranama is een van de machtigste mantra om te helen. Panditji kan hierover meer vertellen. En ik wilde gewoon even de link leggen van Kripa, maar wij moeten ook ons werk doen, onze bhakti doen, onze sadhana doen, onze dharma doen, ten opzichte van onze ouders, onze broers, zussen, familie, ons land, al deze zaken. Dat was het. Ja, dankjewel Radha. Pandit, we luisteren naar u. Wel, ik vond dit stukje van dat nagesprek, laten we zeggen die satsanga die na die twee adhyayas is gekomen, vond ik helemaal perfect. En ik hoop dat het, maar laat het alsjeblieft niet blijven tussen alleen Gopeshwarji en Kanhai en Sigobin en Radhaji. Maar laat de andere mensen ook hun insteek geven. Ze hebben ook een bepaalde levenservaring. Ze hebben ook ergens een katha gehoord. Zodat we ook hun kunnen horen en ook van hun kunnen leren. Uiteindelijk, Pandit, wat Pandit zegt is helemaal waar. Ik sluit me daaraan. Uiteindelijk is de groep bedoeld voor jullie. De groep is gemaakt voor jullie. Klopt. Zodat jullie interactie hebben met ons. En jullie mening laten horen. En met ons gewoon door erover te praten. Gedachten te wisselen. Dat we dichterbij komen om Bhagwan te realiseren. Het is bedoeld juist voor jullie. Pandit, ik zou het ook heel erg dat is prachtig, dank u. Als er van hun kant ook wat interactie zou zijn, wat gewoon van hun vertellen en gewoon hun ideeën wisselen, dat zou ook werkelijk heel fijn zijn. Want ik denk dat Bhaiya Kisung Singh heel veel ervaring heeft en heel veel heeft gehoord. Hij lacht. Ja. Uw microfoon is uit, Harkaka, dus we horen u niet. Microfoon aan. Ja, ben ik nou... Ja, we kunnen je horen. Nou ja, het is zo, en wat ik dan gemerkt heb en mijn ervaring, ik had wel een bepaalde doel. Ik was zeg maar heel, in Suriname was ik eigenlijk heel mager en ik dacht nou ja, wat zal ik nou moeten doen? Want maar ik heb het eigenlijk gebeden dat ik toch eigenlijk een beroep zou moeten hebben. Waar ik dus niet zeg maar, dat ik dus niet in de landbouw zou belanden. En uiteindelijk heb ik toch zelf beslist om naar Nederland te komen. Want in Suriname had ik geen werk en ik kon ook niet verder leren. Ben ik hier gekomen. Ja, binnen 2 weken had ik mijn werk. Daar heb ik eigenlijk 35 jaar volgehouden. Totdat de computer kwam en dan hadden ze me niet meer nodig. Dus ik ben er heel trots op dat ik dat allemaal heb kunnen doen. En dus zeg maar, ik heb het doel bereikt en inmiddels gepensioneerd. En ik heb 10 jaar zelf mijn ontslag ingediend. Wat niemand doet normaal. Maar ik heb het toch kunnen overbruggen. En daar ben ik trots op. Ik heb van mijn eigen geld eigenlijk heel veel geld ingeleverd. Om die 10 jaar te overbruggen. Maar ik leef nog steeds. En Radha die kan wel weten dat ik eigenlijk ook een wereldreis maak. En ik wil ook meer zien en zo. Dus dus dat is dan juist als je doorzet. वही बात भाई कि भगवान के कृपा से ये सब चीज भाई जो आप लोगों ने बताइए लो dus dat is gewoon zo. Dat wil ik eigenlijk delen. Ja. Heel fijn. Kripa werkelijk nodig. Kripa बहुत nodig. En
En Prabhu Gopeshwar, die heb ik ook in meer gezien ooit. Maar goed, hij was vergeten. Maar inmiddels kan hij nog herinneren dat we elkaar hebben gezien. Dus ja. Dus ohi baat hai kripa ke baat hai na. Natuurlijk moeten we werken hoor, want Ja, het is makkelijk gezegd, maar inderdaad, je moet er inderdaad werken. Je moet de streven hebben, het doel hebben. भगवान के प्रसन्न चाहिए करे कि परमात्मा हम कुछ ना है लेकिन आप है सब कुछ कृपा करो प्रभु that's it. Dus zeg maar, het mindere wat je hebt, dan moet je gewoon tevreden zijn. Dat is ook eigenlijk een geruststelling. En dan ben je ook eigenlijk gelukkig. Kijk, natuurlijk zijn er up en downs, maar je moet het voor jezelf een balans maken. Zeggen, ja, oké, die downs moet je ook accepteren. Het is niet makkelijk, maar dat moet gewoon. Dat is in Jyotish later uitgelegd. We gaan later lezen en dan komt Srimad Bhagavatam legt later uit in hoe de Jyotish Shastra erin verwerkt is en hoe wij onze zaken moeten, issues, challenges, obstakels moeten uitwerken. En door Santushta te creëren, en Santushta wordt gecreëerd door yoga te beoefenen of malajap of devotie, noem maar op. Ik zou vragen aan iedereen om een schrift erbij te hebben waarin je vragen kunt schrijven als je vandaag niet hebt, misschien volgende week. Als u iets, een gedicht hebt, dat soort dingen. Dus u moet het opschrijven zodat wij kunnen delen. Een ander ding, Panditji, ik was vergeten om dit te vertellen vorige keer. Aan het eind van de kanto is het goed dat wij een beetje satsang doen, een beetje kirtan, bhajan zingen. Als iedereen dan voorbereidt op een bhajan, dat we dat kunnen doen, want in de Engelse groep gaan we dat ook doen. En als je harmonium kan spelen, dat mag. Dus we willen dat, aan het eind van een kanto willen we dat zeker doen. Als er geen COVID is, kunnen we bij elkaar komen natuurlijk. Maar bij COVID, dus we moeten ermee toch wat rekening houden. Ja, dat was het. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Hier, Anuradha. Ik dacht dat jij een vraag wou stellen. Klopt het? Hoor je ons, Anuradha? Chan Matai, wil jij wat vragen? Anuradha, hoor je ons? Oké. Geen vragen, Pandit, dan zitten we nu aan het einde. Misschien kan jij afsluiten met een gebed. Ja, Bhaiya. Ik heb het zeer op prijs gesteld dat we vandaag die kripa van verschillende invalshoeken hebben mogen zien en mogen beluisteren. Dankzij die kripa van Bhagwanji. We gaan besluiten met Shantakaram, Bhujagashayanam, Padmanabham, Suresham, Vishwadharam, Gaganasadrisham, Megavaranam, Shubhangam, Lakshmikantam, Kamalanayanam, Yoganagam, Vande Vishnum Bhavaiharam, Sarvalokaikanaatham. Prettige tot volgende week. Ja, Hare Krishna iedereen, dan tot volgende week. Ja. Haribo. Hare Krishna.